Okay, Bismillah. Assalamu alaikum, students. वालेकुम सलाम सर। Okay, let's start. वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया बच्चों आप लोगों का. Let's start today's session. And in this session, we are primarily focused on number-based conversions. So this is going to, we are primarily focusing on the examples which are given in the book, and we will learn how a base 2 number is converted into base 10, and similarly the base 10 number into base 2. So we are focusing on simple examples, and this is related with the CLO1. Okay, so as you can see here, आप यहाँ देख सकते हैं, CLO1 is explained binary, hexadecimal numbers, and different digital circuits. Okay, so uh, as far as the chapter 1 contents are considered, we are primarily discussing here the binary and hexadecimal numbers because they have a special place in the literature of digital logic design. So in the last session, we have gone through the number system, और हमने ये define किया था कि number system is basically for a decimal number 0, 1, 2 up to 9, and then for binary base 2 system we have two binary digits, 0 and 1. Today we will learn the other base systems as well, and we will be following the book. I am starting the session, and you will be having the recorded session from the playlist link जो मैं आपको ऑलरेडी फॉरवर्ड कर चुका हूँ ग्रुप में. एक प्लेलिस्ट है, उसमें ये तमाम वीडियोस जो हैं इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू ऐड. सो विदाउट एनी डिले, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानना चाहूँगा if there is a question in our which is linked to our last session. अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जिसमें हमने नंबर सिस्टम के बारे बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में जाना था, तो काइंडली इफ यू हैव एनी क्वेश्चन you can in this interactive session, or you can post your question at any time in the WhatsApp group, but you have to give me some time for the answer. Okay, now moving ahead, first of all, in this example we want to convert a decimal number which is 41 to a binary number. Okay, thank you, Dilawar. So the method is very simple, and I'm sure कि ये आप जो मैथमेटिक्स की जो बुक्स हैं एलिमेंट्री लेवल की, उनमें बेस 2 की कन्वर्शन है. We simply put 41 and divided 41 with 2 because our task is to convert into the binary, and binary number have two binary digits. So okay, some students are using mobile phones and they want me to share the code as well. To share the code, I have to stop the sharing first. Let me stop the sharing, and then I am sending you
0222957. 02229 0222957. Okay. Hopefully the student which need the passcode or the password of the Zoom session now get the password and have the password with them. So convert the decimal number 41 to binary. The method is very simple. And when we divide 41 with 2, we get a remainder 1. Okay. So if we divide with 2, we get 20 and we get uh, zero point 0.5. At least we get 20.5. And for with this 1 over 2, we write 1 here. And similarly, we go on. We divide then 20 with 2 because this is 20. Let me take the annotations with me. Annotations की मदद से इसको समझते हैं. Then I will give you another simple method to do that. So this 20 will come here and we again divide it and we this time get 0. So we write here as 0. Similarly, we go on. Then we take 10 here. Then divide with 2. We get 5 and 0 as a remainder. So we write 0 here. Similarly, the process goes on unless we get 0. जब भी 2 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो we get 0 at the end and with a remainder. And that remainder will become 1. So then we arrange the number in a way like this. So we write finally the number as 1 0 1, then 0 0 1 upward. Okay. So when we convert this 41 with base 10, after successive yani multiple, after multiple divisions through this method, we get a binary number 1 0 1 0 0 1, and then we write here the base. Now I give you another method of doing the same thing, and for this I just go to the paintbrush and I have to remove these annotations because they are primarily on another layer. They are not part of the same layer, so I have to delete them. After deletion, my task is to convert 41 base 10 into a binary number. Here I write the binary number and write here 2. So what I do is just use a method which we learn in sometimes in our elementary classes, divide it with 2. So I get 20 and I get 1 as a remainder. Then I do it again, 10. I do it again. Because space is not here, so I write here the next
So 5 0. Then 2 4 2 to the 4, I get 1, and 2 1, the 2, I get 0 here. Okay, now I change the color. I have to count from here and go upward. Similarly, I go here upwards. So I start writing from here. So I write 1, which is nothing but what is written over here, 1. Then I start writing the next binary bit, 0, then 1, then 0. And remember, this 0 is the same as this 0. I have to write for 2 times. So 0 and 1. So this is my final output. And this is the process how we convert a decimal number with a base 10 into a binary number with a base 2. So I'm sure you all now get the picture. I have to save this ताकि मैं आपसे ये किसी टाइम में शेयर कर सकूं. So we are in the second week, and this is our page number 1. So this is the way how this example 1.1 works. I would like if students have any question. किसी का कोई question है तो वो यहाँ पूछ सकता है. जी बेटा, any question? मदिया कुछ कहना चाह रहे हैं. दिलावर कुछ कहना चाह रहे हैं. दिलावर, आपको ठीक से बोलना होगा क्योंकि आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो होती है. सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बेस 10 कह रहे हैं, हम क्यों कह रहे हैं इसको, तो ये सवाल था मेरा. और जो रिमाइंडर्स का बच रहा है हाफ, सर वो हाफ के अंदर हम मतलब उसको एज अ 0 कंसिडर करेंगे. असल में जो रिमाइंडर 1 है, ये इसने हाफ इसलिए लिया है कि अगर आप इसको क्या कहते हैं डिवाइड करेंगे 41 को 2 से, कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं 20.5 आएगा सर. कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं 41 को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो क्या आंसर आता है? 20.5. 0.5 है ना? यस सर. उसने रिमाइंडर ठीक है. ठीक है, 0.5 लिखा है यहाँ पे उसने, और उसके ठीक बाद है सर. 1 के तौर पे आगे लिखा है. जैसे 1/2 है तो यहाँ यस सर. 1/2 है, इसको आगे 1 लिखा है. यस सर. तो ये चूंकि मेथड किताब में दिया गया है, दिस मेथड इज डिस्क्राइब्ड इन द बुक in this way, so that's why I take you to another method, which is the same method but it's Yes, sir. in a different way. This is the way which we Okay, sir. in our student days, जब हम स्टूडेंट वक्त हमने ये ऐसे सीखा था. जी बेटा, आपकी समझ में आ गया है? यस सर. सर एक क्वेश्चन ये भी था कि जो हम कह रहे हैं बेस 10, तो सर ये क्यों कह रहे हैं? आप शायद पहली क्लास में मौजूद थे. यस सर था. Okay. Actually, if we go to the question, and in the question it is written the convert decimal 41. यस सर. So it is written that the 41 is now a decimal number to a binary. Otherwise, in elementary classes, we get a question like this, 41, and it is written that it is base 10, and then it is equal to, and then we have a blank space, and then here written it is a 2. So we understand from here that we have to convert this decimal number because of this 10 to a binary number or base 2 number because of this 2. So जो ठीक है सर.
माइंड हो गया वो, असल में थोड़ा सा याद नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। हम डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें ये चीज़ें याद रहें, हम इन चीज़ों को समझें। नो प्रॉब्लम विद दैट, आई एम श्योर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। मैं खुश होता हूँ अगर आप सवाल करते हैं। इस सवाल करने से जो हमारे यहाँ जो कलेक्टिव नॉलेज है वो बढ़ता है और ये एक अच्छी चीज़ है। ओके, ये द सेकंड मेथड इज आल्सो इन मोर कन्वीनियंट वे, जो अभी हमने डिटेल में जो है वो किया था। सो द आंसर इज 101001। तो अच्छी बात होगी अगर आप इसके अक्रॉस बेस 2 लिख दें। Now moving towards example number 2, but we are not interested in doing numbers with a decimal point, but we are interested in the conversion of binary number system to other systems. Okay, I will now take another new primarily. So first of all, we learn the number systems. There are many number systems. Some number systems are more famous, and those famous systems include binary, binary number system, which include 0 and 1 as their binary digit. Then we have the octal. Octal have 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. तो अगर हम 0 को भी काउंट करें तो देर आर 8 octal digits. ठीक है, octal digits. Then we move towards the decimal, which is primarily our value system, जिसमें हम बैंकिंग करते हैं और अपनी डेली रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं. This is called a decimal number system, and in this number system we represent numbers from 0 to 9, and then these are called digits, and these digits then form numbers. That means a combination or an arrangement of these digits then form what is known as a number. Then the last one, which is also equally important, is the hexadecimal. Okay, in hexadecimal, it includes all the decimal numbers up to 9. And then it includes A, B, C, D, E, and F, because there are 16 total members, so it contains 16 hexadecimal digits. Okay, so these are the 4 number systems which we study in this course, and our main task is how in this session is how we can convert a binary number into the decimal number and vice versa, similarly to the octal number and vice versa, and similarly to the hexadecimal number and vice versa.
Before we leave this slide or this topic, let me tell you that equip you with the knowledge कि ये primarily systems क्यों select किए गए, because this is also important. Binary number system are primarily used because we have what is called a digital system. A digital system थोड़ा लिखने में थोड़ा इशू हो रहा है. लेट मी राइट इन ए मोर कन्वीनियंट फॉर्म. Okay, so when we talk about the digital system, in our first class we defined a digital system which can process the binary number. For example, a calculator on the back end. हम तो कैलकुलेटर पे नंबर टाइप करते हैं. अभी थोड़ी देर पहले हम कैलकुलेटर को यूज कर रहे हैं, बट in the processing on the back end is in the binary. So that's why these systems are called digital system, because they are based on the processing of numbers, and in this specific case we can say the binary numbers. So that is the reason why we study the binary numbers, because they are used in the digital system. Now, moving towards the octal. Why octal is important? Because the data lines between two components inside a digital system composed of 8 lines. So that means, so these are total 8 number of lines which connect the component 1 inside a computer or a digital system to component 2. So these are the computer components, we can say, or electronic components, or the ICs, the integrated circuits. So this 8 is the reason that we study the octal number, because this is the communication pathway. And second important thing is a memory unit. Okay, I have to take a memory unit inside a digital system has 8 bits of basic storage. So these units can be assigned to the memory as well as to the connections which we found in the printed circuit boards or the digital systems. So that's why we study the octal. And the decimal number is our value system. We already know that the decimal number is our value system. A value system is primarily a system which we use in our daily life, and it is tied to primarily the counting of, for example, money. पैसे से link है इसका. So that's why we study the decimal and also a hexadecimal. Now, the reason we study the hexadecimal is very surprising and is also very natural. Why? Because when we deal with the binary numbers and we encounter a number which is very contain many binary bits, binary digits inside, we cannot remember a sequence. So we convert it into the hexadecimal so that we can remember a binary number. So hexadecimal is a compact representation. If I write here, a compact representation
are binary numbers. So these are some of the reasons which are behind the study of these numbers, and I'm sure now you are more like this subject because this background information actually motivates and develop the interest in a subject. Okay, any question here before I again save this? We have extended it. I think I override it. Okay, but anyhow, we have the recording और उसमें ये save हुई हुई है. Okay, we are not interested in converting a decimal number into the octal number, but we do interest into a number which is decimal, any number with any base system interacting with the base 2 system. ये हमारा फोकस है और यही हमारा जो है ये क्या कहते हैं, जो एग्जांपल्स हम सेलेक्ट करेंगे उसमें से एक नंबर का बाइनरी होना जरूरी है. वी आर नॉट इंटरेस्टिंग इन द फ्रैक्शन. ठीक है, फ्रैक्शन में वी आर नॉट इंटरेस्टेड. वी हैव डिफरेंट कैलकुलेटर्स which can do this task for us, but we are interested how we can convert a binary number into the octal number or a number which is primarily. So here we focus on this example and I use the annotations as well. We focus on only this part. This is a number which is given in binary. So this is a binary number. And our task is to convert that number into the octal number. So what we do, we make a group of 3 binary numbers, 3 binary bits or binary digits, starting from the decimal point. आमतौर पे नंबर यहीं तक दिया होता है. We start from right. Okay, right side. So we make group of 3 and if there is a lacking we write here 0. So we make it 3. Then we consult a table, a lookup table, which I write here that 0 corresponds to 0 0 0. In binary we write in a group of 3, and 1 we write 0 0 1, which is a binary version of this one. Then 2 0 1 0, then 3 0 1 1. How I form this binary numbers? By the same process as of example 1.1. जैसे हमने example 1.1 में पढ़ा है, बिल्कुल उस तरीके से मैंने फॉर्म किया है इनको. 1 0 0. Similarly for 5, for 6, and for 7. So I write 1 0 1, 1 1 0, and 1 1 1. Now I go here, I must change the color. So 0 1 1. Where is 0 1 1? Here is 0 1 1, and it is primarily 3. Okay, so I write here 3. Then 1 0 1. Where is this 1 0 1? 1 0 1 in my lookup table. 1 0 1 is here. 5. So it is 5. So I write here 5. Similarly, I took a group of 3 binary numbers and go to the lookup table
and see where it is, and then I write that number and say that number become the octal number. So as you can see this part, and the base 8 is written here. So this number finally I can write as 10 110 001 101 and 011. This is a base 2 number. So this is base 2 number, and that number now become equal to 615 and I write here that this is binary number, and this is now I have the octal number. As you can see, the reverse is very easy. That if I given a number which is octal number, I go what is 3, so 3 is here, so I write 011. It is very evident. So 5, so I go here 5 is 101, so I write 101. So just I write this number on the top and this number on the bottom. So this way how we convert a binary number into octal and an octal number into the binary. सर बिल्कुल आप क्वेश्चन पूछिए। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने इसमें से आधे को कन्वर्ट किया, ये पूरे को हमने कन्वर्ट क्यों नहीं किया? बेटा वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डेसिमल पार्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम, लेकिन जो कि आपके पास टाइम होगा, किताब होगी, और इफ यू फाइंड द टॉपिक इंटरेस्टिंग यू कैन गो to the fractional part as well. It is not difficult, it is very easy, but we primarily use the calculators. We understand this is the process of conversion manually, but for our task we primarily use. एक मिनट दीजिएगा, एक कॉल आ गई, एक टीचर की कॉल है। Okay, I am back. ये फ़ोन इसलिए करीब पड़ा हुआ है बिकॉज आई एम यूजिंग द वेब वर्जन ऑफ द व्हाट्सएप। ओके, आपका क्वेश्चन ये था कि फ्रैक्शन पार्ट को हम क्यों कंसिडर नहीं कर रहे। फ्रैक्शन पार्ट को इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे बिकॉज इट विल कंज्यूम ए लॉट ऑफ टाइम ऑफ अस एंड इट इज़ ऑफ नो यूज़ इन आवर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एट दिस पॉइंट इन टाइम। ठीक है, तो मेरे ख्याल में मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। नो मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ किसी का और क्वेश्चन? जी जी बेटा, आपका मैं इसीलिए रुका हूँ, मैं बिल्कुल आप पूछें। सर ये मैं पूछा था, ये जो हमने टेबल जनरेट करा है 0 to 7 तक, जो मतलब स्टार्टिंग में जो सर आपने बताया, वो हमने कैसे जनरेट करा है? वो हमने मतलब एग्जांपल 1 की पैराए, जैसे वी कंप्लीटेड द एग्जांपल 1 ना। यस सर। जी, और आपका और भी सवाल था, सॉरी मैं दरमियान में इंटरप्ट किया। सर मैं ये कह रहा था कि हमने इनको कंबाइन करा है, जो हमारे पास बाइनरी नंबर आ रहे हैं उनको 3 डिजिट प्लेस के अंदर कंबाइन करा है। जैसे 0 है उसको बाइनरी ऑक्टल नंबर है, उसको हमने जब बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करा तो उसको 3 डिजिट प्लेस के अंदर हमने लिखा है 000। जी तो बिल्कुल, मतलब ये इसी सामने लिखा हुआ है। तो सर इसको हम इसी तरह लिखेंगे जब हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल को जब बाइनरी करेंगे तो उसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि तो सर ये जो हमारे पास कन्वर्जन है हमें ये याद रखनी पड़ेगी, इसका मतलब। आपको एक दफ़ा पेपर पे करना पड़ेगा। ठीक है सर। एक दफ़ा पेपर पे करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा सा हमें क्विकली करना पड़ेगा। मैं एक और सेशन आपका नहीं लेना चाह रहा बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी विद यू। ओके, दिस इज आल्सो ए टेबल। जो अभी हमने टेबल जनरेट किया है, दिस इज़ वेरी कन्वीनियंट टेबल। अगर आप अपने पास बना के रख लें तो ये आपके पास जो है ना बड़े आसानी से आप इसमें वर्क कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ टेबल इन विच जो हमने यहाँ तक यूज़ किया है, इससे जो अभी हम यूज़ कर रहे थे वो ये वाला टेबल था यहाँ तक। ठीक है, लेकिन इसमें हम जो है वो ये वाले डिजिट यूज़ नहीं कर रहे। लेकिन जब हम डिजिट आगे जाएंगे, इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से करना चाहता हूँ, यानी ये वाले जो पहली लाइन है ना, ये यूज़ नहीं कर रहे, यहाँ तक यूज़ कर। मैं 0 0 0 से लेके तमाम 0 से लेके तमाम 1 तक ये टेबल अभी हम यूज़ कर रहे थे। तो ये कन्वीनियंट टेबल है, अगर आप अपने पास बना के रख लें, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। So this example is primarily deal with how a binary number is converted into the hexadecimal number. Okay, there's only one difference, and that difference is that we make a group of 4 now। 4 डिजिट्स का ग्रुप बनाएंगे। देखें ऊपर उसने लिखा भी हुआ है ग्रुप ऑफ 4, और इसके साथ हम 2 0 लिख लेंगे। और जब ये हम कंप्लीट कर लेंगे, देन वी अगेन गो टू द टेबल एंड देन राइट द नंबर्स। ओके, तो ये जो हमारी टास्क है ये एक तरफ की कंप्लीट हो गई। नाउ ओनली वन थिंग इज लेफ्ट, हाउ ए बाइनरी नंबर इज कन्वर्टेड इनटू ए so if we are given a binary number, how we can convert this binary number? So for example 101, how we can convert this number into a number which is decimal number? So this is very easy. We write it as 2 to power 0. I'm just giving one example. Multiplied with this one number. Similarly, we take this. This is position number 1 multiplied with 0. Then we go ahead, go to 2 to the power 2 multiplied with this 1. So we go like this. We solve this equation and write a number here. Okay, so we write 2 here. So this become 4, this become 0, and this become 1. So this number is 5. So we go increasing the